सी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट थिंग क्या है कि योर एज फैक्टर, ठीक है. यू आर लाइक 17 इन योर कॉलेज, मे बी 18 व्हेन यू एंटर योर कॉलेज. सो यू गाइज डोंट हैव अ वाइफ, यू गाइज डोंट हैव बच्चे मैनेज नहीं करने हैं. योर पेरेंट्स आर नॉट आस्किंग यू फॉर मनी, ठीक है. यू कैन मेक एनी मिस्टेक्स, इफ इट फेल्स तो कुछ नहीं जा रहा है, उसके बाद भी नौकरी तो मिल ही जाएगी, ठीक है. 4 साल बाद मिल जाएगी नौकरी. Second thing is, so you guys don't have any liabilities associated with you. You don't have to think about sending your child to school or to college, उसकी फीस पे करना and looking after the well-being of your parents. ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है इस एज में, ठीक है. Generally these responsibility come at the age of 25, 26 or 28 when you are at that age. So उस टाइम पे स्टार्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, because you have to look after your family, you have to look after your parents. So उस टाइम पे it's much a higher risk. Like stakes are more higher, but right now you don't have any liabilities. If you guys need a office, you can use your classroom or some society room in college, ठीक है. You guys can host your meeting in college, ठीक है. You guys have friends all over different colleges, so they may also help you to promote your product into different zones. So this is why like college time is the best time to start. So that's why students should not be afraid. सेकेंड चीज क्या है कि अगर फेल हो भी जाता है, लेट्स से यू स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर, इट फेल्ड फोर्थ ईयर में, लेट्स से आपने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर लगाया, कुछ नहीं हुआ, तो देन यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर जॉब्स, ठीक है. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन द इकोसिस्टम, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ फ्यू थिंग्स वर्किंग ऑन योर स्टार्टअप फॉर 2-3 years. बाय वर्किंग आई मीन सीरियसली वर्किंग. सिर्फ ये नहीं कि लिंक्डइन पे आपने डाल दिया CEO ऑफ दिस, CEO ऑफ दैट, उस तरह से नहीं. मजाक सा बन जाता है, ठीक है. वो मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मजा आता है, मैं CTO बनूंगा, मैं CFO बनूंगा, बट देन यू रियलाइज 6-8 months डाउन द लाइन कि भैया पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है. टाइटल से पैसा नहीं आता है, ठीक है. सो व्हेन यू रियलाइज दिस, so this is the first awakening. So yeah, that's why like even if you fail after 3 years, ठीक है, or 4 years maybe, so you guys will have vast knowledge, you guys will have a nice network, so you can at least get a job easily. Job ऐसा नहीं कि बहुत high paying तुरंत ही मिल जाएगी, but yeah, you can go to a job, you can switch from startup to a job very easily. So this is the benefit with college students, and that's why they should be sure, ठीक है. अभी क्या हुआ, I just left a startup on 29th May. I surrendered my assets. I was taking a per month salary and everything from them. So अब क्या हुआ, सैलरी भी बंद हो गई. I am in Mumbai, I am stuck here. So now I thought कि okay, let me look for a new job. So I just posted on a few places over LinkedIn and all. And like within 3-4 days, like मैंने परसों पोस्ट किया, and I have like now 1 or 2 job offers, ठीक है. 3-4 interviews दे लिए, and then I realized अभी job नहीं करनी है, अभी I am working on one of my other projects, so leave it. So thing is कि build your net. You have when you will work for 3 years in startup ecosystem, and you are actually working. Again, I am saying there is difference between acting and working, ठीक है. So if you are actually working, people will come to know you and you will have a good network, so you guys can get back to job, ठीक है. भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी किसी भी हालात में.